The world is currently experiencing severe environmental imbalance due to climate change. Irregular rainfall, the rapid melting of glaciers, and catastrophic disasters like tsunamis are becoming increasingly common. These changes are leading to a significant loss of biodiversity each year, posing a grave challenge to the ecosystem worldwide. In this scenario, the youth hold immense potential to make a difference. To empower them and encourage wider involvement, the Odia daily newspaper Dharitri has organized the fourth edition of its Youth Conclave. This year's theme is Climate Change Building Resilience, and the two-day event is being held on November 23rd and 24th. On the first day, the program Green Heroes Speak took place at the Press Club in Master Canteen, Bhubaneswar. Young environmentalists from various parts of Odisha and the country gathered to share their insights, experiences, and ideas on expanding climate change awareness. I'm constantly trying to reach to them and share my thoughts and opinions about how the climate is changing drastically and how we can take the smaller steps. Be serious. लोग कह रहे हैं तुम लास्ट जनरेशन हो चेंजेड ऐसे बोल रहे हैं बिकॉज यू आर नॉट सीरियस इनफ टू हैंडल दिस सिचुएशन प्लीज बी सीरियस क्लाइमेट एक्शन तो डेफिनेटली बहुत ही इंपॉर्टेंट अच्छी डेली जदि किछि किछि जदि एक्टिविटीज करार अच्छी जो थे आम क्लाइमेट को इम्पैक्ट करिपरिबा मु कहबी प्रथम हैला हमर वेस्ट को सेग्रीगेट करवा ओदा सुखिला किंबा सैनिटरी वेस्ट को अलग अलग करिया कथा जो ओदा वेस्ट जो बाहरुची ताकू आमे कंपोस्ट करिया कथा सेथरे गोटे हमर हेल्प हेजो कि सेथरे लैंडफिल्स को जीवनी हमर वेस्ट सेकेंडली हेबो सिंगल यूज प्लास्टिक्स जति कि कम यूज करि परिबा निजर बॉटल कैरी करि परिबा निजर हैंकरचिफ कैरी करि परिबा एथरे छोट छोट स्टेप्स नेले गछ ऑफ कोर्स प्लांट करिवार एंड ऑल इस सब स्टेप्स नेले डेफिनेटली हमर एनवायरनमेंट विल बी अ मच बेटर प्लेस आउ भी हैला कि हमर रीसाइक्लिंग एंड ऑल भी हमको प्रमोट करिवा कथा तो these are certain steps that one can take. The discussions emphasized the importance of involving people at the grassroots level to drive impactful environmental action. The program began with an address by Adyasha Satpathy, CEO of Dharitri and Orissa Post. She reiterated the newspaper's commitment to spreading awareness about climate change and highlighted the conclave's aim to unite individuals working for environmental protection. Tathagata Satpathy, editor of Dharitri and Orissa Post, expressed his gratitude to those tirelessly contributing to nature conservation in Odisha, often without formal recognition. He praised the youth and their growing role in amplifying these efforts through platforms like the Green Heroes Speak program. So this is the fourth edition of Dharitri Youth Conclave on climate change. We have been doing this and even before the conclave for the last 10 years Dharitri has been working on a slogan called Hati Bonchao, Hato Misao. But this time we thought that all the grassroots environmentalists of Orissa who are working on climate action, the genuine environmentalists, they all need to get together to discuss ideas, to exchange their knowledge and get to meet at a place which is informal, where they can relax but also learn from each other, know each other. So Green Heroes Speak gives them a platform and a chance to introduce themselves, to get to know each other, and I would think it's a unique day where all most grassroots environmentalists got a chance to come and spend a day together. निष्काम कर्म जो कथा अच्छी से निष्काम कर्म करुथबार ओडिशा रे विशेष बहुत लोक अछंती बोली मु केबे कहबिनी कारण मु ओडिशा रे बहुत अंचल जाईची बुलीची देखीची एठी क्षमता पाई कॉन्ट्रैक्टरी पाई व्यवसाय पाई कि बहुत लोक बाहरिवे किंतु निष्काम कर्म करिवा पाई जोठी कि एप्रिसिएशन नाही जो गोटे किए प्रशंसा करनी जे भोट मागबनी जे अर्थ पाऊ जे निज घर अन्य कौथरू चाकरी कि बिलरे खटिकी जो पैसा आसूची से पैसा खर्च करी काम करुथबो सेमती किछि पिला आज मो सम्मुख रे अछंती सेतिपाई कि मु महाप्रभु को जगन्नाथ हुंतु जीशु हुंतु मोहम्मद हुंतु कि अल्लाह हुंतु जे हुंतु भी
समस्त कि मु आज प्रार्थना करुच्ची ये गोटे धरित्रीर प्रयास आद्याशा शतपथींकर एटा गोटे तांकर प्रेम बोली कहबी एपाई कि जीवन रे से बहुत समय दौरान जोटा कि मु बेले बेले भावे जे एते समय केमती सी दे पारुछंती गोटे प्रोजेक्ट पे गोटे श्रद्धारे सी दौरान एथुरु किछि गोटे लाभ नबा कि कौन गोटे फायदा उठेबा से नुहे फायदाटा हम समस्त स्वार्थ अच्छी आमर भी स्वार्थ अच्छी आद्याशा शतपथी भी स्वार्थ अच्छी से स्वार्थटी हूँ ओडिशार मंगल. The event also featured a mesmerizing musical performance by India's popular environmentally conscious band Viraha. The band captivated the audience, leaving a lasting impression on the young attendees. The second day of the Youth Conclave, scheduled for November 24, will continue the discussion on climate change, building resilience with a focus on collaboration, innovation, and action. The event aims to inspire more individuals to contribute to combating climate change and fostering a sustainable future. खुद को बदल जरा थोड़ा सा तू सबसे मिल जरा थोड़ा सा खुद को बदल जरा थोड़ा सा तू सबसे मिल जरा ये धरती है तेरी ये बंदे सब तेरे हटा दे मिटा दे धर्मों के फंदे तेरे ये धरती है तेरी ये बंदे सब तेरे हटा दे मिटा दे धर्मों के फंदे तेरे तू आजा अब साथ में सबको लेकर तू आजा मिटा दे सब फासले जैसे एक नई सुबह सा तू आजा अब साथ में सबको लेकर तू आजा मिटा दे सब फासले जैसे एक नई सुबह सा थोड़ा सा खुद को बदल जरा थोड़ा सा तू सबसे मिल जरा एवरीबॉडी थोड़ा सा खुद को बदल जरा थोड़ा सा एवरीबॉडी 1 2 3 1 2 थोड़ा सा खुद को बदल जरा थोड़ा सा तू सबसे मिल जरा थोड़ा सा खुद को बदल जरा थोड़ा सा तू सबसे मिल जरा. I would say it's a ray of hope because in environmental and climate change this scenario you will not find a lot of people sitting in one place. The good people, the best thing I got to know about the conclave that these are all local environmentalists who are trying to save their villages, their towns, and that is the best thing that you can do. Not everybody has to go to UN and speak about climate change. That's not how our earth going to be saved. So when I saw these presentations and when I see people listening to our songs and enjoying, because there's not been a single movement in history which has gone successful without a song in it, and so it feels like a family to summarize it. आओ मिलकर कदम बढ़ाएं इस धरती को हम सब बचाएं. By bringing together change makers and the youth, Dharitri is playing a pivotal role in building awareness and resilience in the fight against climate change. Stay tuned to Orissa Post Live to stay updated. सरकार तेरा अर्ज़ तुझे कर दे मुझे मुझसे रिहा अब मुझको भी हो दीदार मेरा कर दे मुझे मुझसे रिहा मुझसे ही रिहा.
मन के मेरे ये भरम कच्चे तेरे ये करम. Stay tuned to Orissa Post Live to stay updated.